दरअसल सर इम्प्रेशन यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसा बाहर पब्लिक को लगता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि जजेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, कैसे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। अब डू यू थिंक कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है इस प्रोसेस में? ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता ज़रूर है, पर जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं हम, देखिए पिछले 2 साल में व्हाट आर द नॉर्म्स ऑन विच वी अपॉइंट जजेस, इसको हमने पब्लिसाइज किया है वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट के। फर्स्ट वी लुक एट द सीनियरिटी ऑफ द जज। ये नहीं कि सबसे जूनियर मोस्ट जज को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सबसे जूनियर मोस्ट जज है उसको आप सुप्रीम कोर्ट लाएंगे, ये बात तो चल नहीं सकती। सीनियरिटी, इंटेग्रिटी, merit, the need for regional representation of different states in the Supreme Court, the need for broad and diverse representation on the basis of gender, marginalization, on the basis of also, social transformation, such as bringing the scheduled caste, scheduled tribes, the other backward classes, adequate representation to different minorities. These are all the factors which are borne in mind by the Supreme Court Collegium, और इसको हमने पब्लिसाइज कर दिया है हमारी वेबसाइट पे कि ये मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं हम कि किसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है। अब जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एक हम लोगों को ये ज़रूर मन में ध्यान में रखना चाहिए that we are dealing with the lives and careers of people who are going to be appointed to the Supreme Court. अब कई बार ऐसे होता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस जिनकी हम नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, मान लीजिए 10 लोग कंसिडरेशन में हैं, उसमें 3 लोग नियुक्त किए जाते हैं, 7 लोगों को आप नियुक्त नहीं करते हैं। अब हर चीज़ हम यदि पब्लिक आई में उसको प्लेस कर दें, इफ़ वी डिस्क्लोज ऑल द रीजंस, that will seriously affect their ability to perform as judges in the future. Likewise, when we are appointing lawyers to the High Court, there may be, say, a group of 25 lawyers who are under consideration. Eventually, 7 may be selected. Now, if we were to start publicizing all the details of the personal lives of people who are going to be appointed, good people will say, I don't even want to be considered for appointment. So, in the process of transparency, Right. we should not find a solution which would be worse than the disease which we are seeking to cure. Yeah. Because you are ultimately dealing with the lives of people, careers of people. So there has to be this very delicate balance which is drawn between transparency, objectivity, and yet preserving the candor in the process. आपको मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन आती है सुप्रीम कोर्ट में, the judges of the Supreme Court who have routed through that High Court would be consulted. अब मैं बम्बई में उच्च न्यायालय में मैं जज रहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मैं चीफ जस्टिस था, तो बम्बई और इलाहाबाद के कोई भी अपॉइंटमेंट्स हों उसमें मेरी राय ली जाती थी when I was not in the collegium. If all that the consultee judges have said is going to be put on the public platform, many consultee judges will find it very difficult to express their views candidly. Right. Because ultimately you must be conversant of the social system, the pressures which operate within the overall the social system in which all of us exist. So there is no real straightforward answer how much transparency and how much should be the balance which is to be drawn in terms of preserving the sanctity of the system.